अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कल्चर एंड अनार्की ऐसे बाय मैथ्यू आर्नल्ड। कल्चर एंड अनार्की इज अ कलेक्शन ऑफ ऐसे रिटन बाय मैथ्यू आर्नल्ड इन 1869 that attempts to explain the social turmoil of the 19th century Britain during the Industrial Revolution by redefining what culture is. The collection of essays also explored the relationship between culture, society, and the individual. It consists of 6 chapters, each addressing different aspects of Arnold's ideas. Here's a brief overview of each chapter. Introduction. Arnold describes culture as the search for anarchy. Anarchy means sweetness and light. Culture means society, way of life, custom, and tradition. Then he compares anarchy with the which represent the absence of order and knowledge in society. Anarchy means unrest, lawlessness, and disorder. Arnold believed that culture is necessary for social progress and happiness. This essay is divided into following 6 chapters: sweetness and light, doing as one likes, and doing as one likes. Like कोई भी अपनी मर्जी से अगर काम करता है तो उसको नारकी का नाम दे दिया जाता है, जो कि दूसरों रूल्स को फॉलो नहीं करता, बस अपने ही रूल्स को फॉलो अपनी ही लाइफ में मगन रहता है. Barbarian, Philistines and Populace, Hebraism and Hellenism, Poro-Anam and Nasaricism, ये आई थिंक कोई फ्रेज है. Our liberal practitioners, ठीक है. Sweetness and light. In the opening line, author defined culture. He says that society is always moving toward a movement toward the idea. People who lives in culture understand the lives. Who follow anarchy fight with each other. जो कि एक प्रॉपर रूल को फॉलो करते हैं वो सही लाइफ गुजार लेते हैं, लेकिन जो कि अनार्की में रहते हैं तो फिर एक दूसरे के साथ लड़ाई ही करते रहते हैं. पर्पस ऑफ कल्चर इज परफेक्शन. Culture must have beauty and intelligence. In order to achieve perfection, there are 2 requirements: a desire to learn based on seeing things as they truly want, and an effort to ensure that the rest of the society is built on this knowledge and recognition. As a result, the culture is never completed without perfection. Arnold then more explain how and why perfection is the heart of a true culture. He argues that Victorian England focused on materialism and industrialism, resulting in the absence of true culture. He sees Englishmen as naturally obsessed with liberty and their own selfishness goals rather than caring about sweetness and light. Doing as one's like means anarchy. In this chapter, we explain why there is anarchy. Second chapter is more about like a response essay. Critic define anarchy as a opposite of culture. अच्छा ये ना थोड़ा सा ब्लर है तो मैं आपको पढ़ के सुना रही हूँ तो आपको समझ आ जाएगी, ठीक है. Anarchy is the result of doing something on the basis of freedom to enjoy the act rather than the impact of that act. The view of anarchy is based on the idea of British citizen having become too willing to trust in a machine of parliamentation democracy to solve problem caused by the conflict of everyone doing what they want. Arnold speaks about industrialism and its harmful effect on the national psyche, also exploring the danger of anarchy and unchecked individualism. Anarchy happens when there is no law and order. जैसे मैंने आपको पहले बताया कि वो किस लॉ को फॉलो नहीं करते और अपनी ही मस्ती में मगन रहते हैं. People did what they want, like जो वो चाहते हैं वही करते हैं. He said there are 2 different ways to control anarchy. State government must be powerful. कहते हैं गवर्नमेंट पावरफुल होनी चाहिए तभी हम anarchy को कंट्रोल कर सकते हैं और एक सोसाइटी में पुरअमन माशरा उसको बना सकते हैं. Barbarian, Philistines and Populace. In this chapter, Arnold divided society into 3 groups. There are as follows. अच्छा, बारबेरियंस कहते हैं अपर क्लास को, फेलिस्टाइंस कहते हैं मिडिल क्लास को, पॉपुलिस कहते हैं वर्किंग क्लास को, लोअर क्लास को. बारबेरियन आर दोज हु डिस्ट्रॉय बोथ फेलिस्टाइंस एंड पॉपुलिस, ठीक है. अपर क्लास के लोग जो होते हैं वो वर्किंग क्लास को भी डिस्ट्रॉय करते हैं और लोअर क्लास को भी. बारबेरियन बिलीव्स ऑन इंडिविजुअलिज्म. दे शो देमसेल्व्स एज चैंपियन ऑफ फ्रीडम. दे कैन डू एनीथिंग व्हाट दे वांट फ्रॉम देयर चाइल्डहुड. अनार्की रिमेन्स इन देयर थॉट्स एंड माइंड, ठीक है. जो अपर क्लास होते हैं उनके अंदर अनार्की होती है, वो किसी के रूल्स को फॉलो नहीं करते, वो खुद जो चाहते हैं वो करते हैं. वी कैन डू एनीथिंग व्हाट वी वांट. दे कैन ब्रेक द लॉ एज वेल. Arnold believed. उसके बाद Philistines are those who are so wise, hardworking, and also they are industrialists. They came economic progress in country. Populace, both Barbarian and Philistines rules them. They consider them superior and Populace consider inferior and consider Populace too much inferior. Both classes rule on Populace. उसके बाद Hebraism and Hellenism, इसको आप लोग यहाँ पे खुद पढ़ें.
आई थिंक मुझे पढ़ के सुना देना चाहिए। द सेंट्रल आइडिया ऑफ हेब्रिज्म इज कंडक्ट, ओबीडियंस एंड स्ट्रिक्टनेस। द सेंट्रल आइडिया ऑफ हेलेनिज्म इज टू सी थिंग एज दे आर एंड एक्सेप्ट द ब्यूटी एंड चार्म, गेटिंग rid of one's ignorance. He argues that Hebraism Hellenism has long been popular in English society, but now it's time for Hellenism. अच्छा, उसके बाद ये कोई ना कोई वो है फ्रेज है, आई थिंक लैटिन फ्रेज है, ठीक है। इसका मतलब है कि बट वन थिंग इज नीडेड, दिस एसे वर रिटन ड्यूरिंग अ टाइम व्हेन पुरिटन समवन हु ड्रेसेस द स्ट्रिक्ट रिलीजियस प्रिंसिपल, ठीक है। पुरिटन का मतलब ये होता है कंट्रोल ब्रिटिश रिलीजन, हाईलाइटिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ द पुरिटन डिसिप्लिन over other virtues, sweetness and light associated with Hellenism and Greek culture, because he believes ancient Greek had interest to see things the way they really are. So Greek art is more about portraying nature. उसके बाद आ जाता है our liberal practitioners, ठीक है। उसको पढ़ लें, उसको पढ़ने के बाद नेक्स्ट कंक्लूजन पे आ जाएं। इन दिस कंक्लूजन वी रिजेक्ट एवरी काइंड ऑफ गैदरिंग एंड प्रोटेस्ट, इवन दे आर नोबल रीजन. He believed that a believer in culture should always support the state, since without order, society is at risk and perfection can only be raised with it. As a result, all type of popular protest must be carefully banned. The author conclude that those who believe in a culture shouldn't actively participate in public life, but rather observe, consider and promote true culture and its value. तो यहाँ पे हम एंड करते हैं. आई एम डन विद दिस वीडियो. अगर आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अच्छे से पढ़ लें. जिस चीज़ की समझ नहीं आ रही मुझसे पूछ लें. देखें, मैं बहुत से लोग कहते हैं कि आप हमें साथ साथ समझाया भी करें. अब मैं जो हो गई हूँ अपने नेक्स्ट सेमेस्टर्स में, तो आई थिंक 1 साल पुराने मेरे नोट्स हैं, तो मेरे माइंड से भी जो कॉन्सेप्ट सारे हैं वो अनक्लियर हो चुके हैं. इसलिए मैं ज़्यादातर इंग्लिश ही करके बता देती हूँ. जिस चीज़ की मुझे माइंड में मेरा होता है ना कि जी ये मेरे माइंड में भी फ्रेश है, तो मैं उस चीज़ की उर्दू करके आपको बता देती हूँ. लेकिन जो मेरी इंग्लिश जो है वो काफ़ी ज़्यादा ईजी होती है इनमें, तो मुझे उसकी उर्दू करने की इतनी ज़रूरत भी नहीं पड़ती. एक बार ही पढ़ने से समझ आ जाती है. अगर आप लोग गौर से इसको पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी. सो नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त. सी यू सून. अल्लाह हाफिज़.